हाँ जी भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एक दफ़ा फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं एलन वेक 2। यार कल बड़ा मज़ा आया था, बहुत शानदार मज़ा आया था, लेकिन आप लोगों से दुख के साथ कहूँगा कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। यार मैंने कट भी लगाए हैं, उसके बावजूद यार आप वीडियो पूरी नहीं देखते। मेरे जो है ना वॉच टाइम यार वो बहुत कम आ रहे हैं, जितनी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस हिसाब से बहुत कम है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही तो भाईजान फीडबैक दें। फीडबैक भी नहीं आप लोग देते हो। शुरू करते हैं भाईजान। लास्ट वीडियो में हमने दिल लगाया था उसका, और उसके बाद ये दरख्त के अंदर आ गए हम। आगे देखते हैं हमारे साथ क्या कुछ होगा। लोगन? ओए इसकी बेटी की आवाज़ आ रही है। Where are you? यहाँ पे चल के देखते हैं, आवाज़ यहाँ से आ रही है। Logan's back in Virginia. You're imagining things. यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट वीडियो में यार मैं डर भी बड़ा हैवी गया था, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देखें। गेम प्ले पार्ट 2 जो है एलन वेक का। किर किर पिर पिर आवाज़ें आ रही हैं यार। अब तो यार मैंने कट भी लगाए हैं ताकि आप लोग एंगेज रहें। मैंने सिर्फ स्टोरी दिखाई है, बातें भी आगे कर दूं क्या? अगर बातें भी आगे कर दूंगा तो आप लोग क्या देखोगे यार? फिर क्या देखना, सिर्फ एक्शन देखना क्या? ये फिर वहीं आ गई है। This place is looping. ये फिर वहीं पे आ गई है। मैन्यूस्क्रिप्ट मिला है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है ख़ास। ये जब हम जाएंगे माइंड प्लेस पे तब एक दफ़ा ही देखेंगे। माइंड प्लेस वाला सिलसिला जो है ना वो ज़रा लंबा है। Need to find Nightingale. Need to find Nightingale. ओ तेरी तरा कर देंदी है गेम यार। चलते हैं, उम्मीद है कि डिशुम ठाठा होगी आज। आज तीसरा दिन है इस गेम को। डिशुम ठाठा थोड़ी सी मिली है यार। डिशुम ठाठा भाई बस 3 बंदे मारे हैं, उसके अलावा तो नहीं मिली। The writer was writing again. यहाँ चलते हैं, यहाँ से आवाज़ आ रही है। Nightingale. ये नाइटिंगेल से बात करती है मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक समझ आई है। इसके पास ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं। Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. ये मैं कहाँ आ गया हूँ? चलो जहाँ भी हैं, गेम तो आगे बढ़ी। उठा ले रे बाबा, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। शाबाश शाबाश, सब उठा ले। और कुछ FBI का बैच, ये उसका है नाइटिंगेल का। अब ये इसको देख क्यों नहीं रही? अच्छा जी, ट्रायंगल दबा के मेट पैक यूज़ होगा। मेरी पावर फिर भी फुल नहीं हो रही, लेकिन मैं कर ले नहीं, अभी नहीं करता। अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं सरवाइव करूँ। ओए शॉटगन रिलोड करो भाई। ठीक है, 2 गोलियाँ ही हैं मेरे पास शॉटगन की, बस उसके बाद रिलोड करनी पड़ेगी। लेफ्ट पे गया था वो। भागेंगे यार, डरेंगे नहीं। ओ यार क्या गेम है यार, दिल बैठ रहा है। दिल बैठ रहा है यार इसकी म्यूजिक से। अबे कोई हंस रहा है। ओ तेरी, अबे तो टूटता भी तो नहीं ना। छोड़ मुझे, छोड़।
इससे भागूं? बहुत अच्छे, कर लो पाए रीलोड। L1 दबाएंगे। तेरी मैं यार किए यार। रन ओके। Get to safety. गलत दिशा में भाग रहा हूँ क्या? अबे फाले, ये क्या बकवास है यार? उससे फिर लड़ाई करनी है क्या? इसको मैं मार लूंगा। आजा आजा, थारे बिना लागे नहीं। ओए स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। टना टना ना 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 ना। हाँ आया मजा। अब मुझे ये बता दो भागना किस तरफ है? इस तरफ भागना होगा। मैं गलत दिशा पे भाग गया था। ये फिर से वही मिला है। अच्छा बैटरीज हैं, बैटारीज हैं, बैटारीज। इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग हो गई है गेम। इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी तो इंटरेस्ट बना रहेगा। ओ तेरी मैं यार, एक ही चीज़ है। ओए नहीं 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 नहीं, 1 सेकेंड ब्रो, ब्रो 1 सेकेंड ब्रो। ये क्या? मुझे बैटरीज लेनी है वहां से। कैसा ये बग है, अजब सा बग है। वेट ब्रो, किथे जावा? ओ किथे जावा? यार ओ तेरी यार, एकदम ही मुंह ते चढ़ जाता है। यार ये फिर से रिफ्रेश हो गया। तेरी मैं मर जा बगैरता। किथे फंस गया वा यार मैं। जल्दी करो बेगम साहिबा। चलो मैनू जगह ही नहीं नजर आ रही, किथे जावा मैं? मुंह ते चढ़िया हुआ है। पावर तो नहीं होगी मेरे पास ना। पावर क्यों देंगे? किथे गया? मर जाओ। ਤੁਹਾਡੇ का मरन का रिवाज नहीं। चलो जी 0-0। यार ये क्या बकवास है? कहाँ जाऊँ? ये जफ्फी डालेगा मुझे। आवाज़ आ रही है मुझे इसकी। यार कहाँ जाऊँ? एक्स आया तो था, क्या किया? बस रे गप्पा बस। इधर कुछ गिरा हुआ था। बैड सीन है, बहुत बैड सीन है। ऐ मैं हुन मर जाना, देखना तो सही। तेरी मैं किथे गया? ओए खलो ओए। ओ लाइट चला तेरी मैं।
ओए यार तरले करके हाथ जोड़ के मरा है, हाथ जोड़ के। गोलियां ही नहीं थी, मैं क्या करता। Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. हम यहाँ पे लड़ रहे थे क्या? Hey! पानी पियेंगे इसी बात पे? Are you okay? No! It's my fault! ओए एलन में With my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. कंटिन्यू करेंगे भाई लोग। Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. एलन वे कहाँ से आ गया Mr. यार Wake, एकदम this से? is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. चलो जी। Investigate the previous flood area. Take the car back भाई। Is this the dark place? एलन वे कट सीन में तो बड़ा तगड़ा लग रहा था, ये तो डरपोक सा लग रहा है यहाँ पे यार। चलो भाई गाड़ी लें, चलो चलें। Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. लोग पहुँच गए यार गाड़ी पे। इतनी ज़्यादा दूर से हम लोग आए हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं, बहुत पीछे से लेके आए हैं। मैंने सारा कट कर दिया। Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. ऐसी जगह पे सिग्नल कैसे आ रहे हैं यार?
यार ये दोनों एक साथ ही पीते हैं कॉफ़ी। Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. की हो गया हूँ ना? I remember. ये क्या पिछला पार्ट याद करेगा? यार क्या ग्राफिक्स हैं, गेम लग ही नहीं रही है भाई। अब देखो यार, ये सब तो मैं आगे नहीं ना करूँगा, मतलब आप लोगों ने स्टोरी भी तो देखनी है ना भाई। लेट नाइट। Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? ये तो असली है। Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending, so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny.
But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. It's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger, and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. ये क्या सीन है भाई लोग? I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? Well, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? जो इसके साथ हो रहा है उसने पहली बुक लिखी हुई है. I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I kept expecting to disappear once this scene ends. ओ तेरी ओए. कोई गन कुछ भी नहीं. चलो. I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. चलो जी. कोड ढूंढेंगे क्या? I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? क्या ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं यार. कितनी तारीफ करूं मैं. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. 665 तो नहीं? लगा के देखते हैं. हो सकता है कि ये हैवी हो. कैसा? इधर से कुछ There was आवाज आई something है. here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. डरेंगे नहीं, सीधा जाएंगे. स्टोरीज में जाएं. ज़्यादातर स्टोरी जो है वो ख़तरनाक ही होती है. देखा? There was something in the studio with me. I had to get out. यहीं भी आना था. This is the ritual to ritual. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced.
about writing here for countless days. अपनी दिमाग में ये घूमता ही जा रहा है बस. I couldn't leave. This क्यों? wasn't the way out. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. यार अब इसको भी इसके पास भी बोर्ड है. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. अच्छा, इसको अपना escape भी लिखना है ना. ये जो लिख रहा है वो इसके साथ होता ही जा रहा है. अब ये कह रहा है कि मैं अपना escape खुद लिख लेता हूँ. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. क्या गंदी आवाज़ें आ रही हैं यार. ये फिर शो पे आ गया है. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. Real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. Best-selling writer, books, the films are based off. Let's do this! इसके अंदर नहीं जाना क्या? मुझे तो लगता है यही करना है. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? ये मैं explain वाला भाई लोग. Exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. मेरा दिल चाह रहा है मैं आगे कर दूं भाई लोग. New film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. फिर अंधेरा कर देता हूँ उन्हें. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp?
तेरी चेंज हो गया भाई, क्या पता खुला ही हो। नहीं, इसको मैंने खोला तो था, क्या पता इधर लिखा हो। अब अगर हर चीज़ वही है तो चेंज क्यों हुआ? सिक्स 5 6 नहीं 5 6 5 6 ये तो ज़रा 5 6 5 कैसा नहीं दिया। अच्छा इस दफ़ा हम इधर जाते हैं, जो कि ये नहीं जाएगा। ये है। इस दफ़ा लास्ट टाइम भी यहीं से गए थे। हाँ यहीं से गए थे। ओए खुल गया। Hello? भाईजान कोई गाना गा रहा है, रहने ही देता हूँ। कोई गन, कोई शन, कोई चक्कर नहीं। मैप भी नहीं खोल रहा। अगर मैप तूने पकड़ लिया तो भाई खोल। बेसमेंट, अच्छा जी यहाँ पे लगनी है चाबी। यहाँ पे लगनी है भाईजान चाबी। एलन वेक। चलो जी ये इसकी भी माइंड प्लेस है। लाइटें ऑन कर लेना भाई। जेनिटर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। ये यहाँ से मैप लिया लेकिन भूल गया। हाँ जी पौरप्पा। There you are, Tom. Yeah, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I needed to find the... Totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? चाबी दे दे। You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. ठीक है। Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. हाँ जी भाई लोग, चाबी इस भुक्कड़ के पास ही थी। भुक्कड़ से चाबी ले लिया। नीचे जाके देखते हैं। अपने पास कोई गन नहीं है, कोई शन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मैप लेगा क्या? ये क्या आ रहा है? वो एग्जिट। बाबू भैया। An old lamp and a shoebox. Was this what the janitor had left for me?
The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. यहाँ पे गेम I से felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. ठीक है भाई लोग, आज की वीडियो थी यहाँ तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।